And in comes the runner as well. Welcome, Vineet. Good evening, Ajay, and a very Merry Christmas to you. Well, the crowd at the stadium seems to have thinned right after the starry-eyed boy Akhil Akineni left. But nevertheless, the match is still packing a punch. A very delicate situation. Sameer Kocher doing a fine job, but he had to depart. Some poor shots and some poor thinking and lack of execution, perhaps, Ajay Mehra, that led to his early departure. Could have stuck around after Manoj Tiwari took that chance and headed right for the dugout. Just hit a few good boundaries, but this is going to be a wide. They need a few runs here, whatever way they come. The strikers did a wonderful job. Bit of tension prevailing there in the dugout. You can see the captain out there, Varun Badola, in the middle. Win the toss and batting first. Things haven't gone their way. Coming down the track. That's a good strike. And that's going to be a much needed boundary as well from Raja. He's making a move here. Not a very valiant effort to stop that ball. And gets them another 4 runs and adds to the tally. Takes them to 36 runs for the loss of 2 wickets, and it's the 6th over that's on. बड़ी चीज ये है विनीत कि रनों का क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि अगर रन नहीं होंगे तो गेंदबाज फिर क्या दबाव में डाल पाएंगे. कम से कम 70-80 रन जितने भी बन जाएं. विकेट अभी भी हाथ में है, ये नहीं कि विकेट हाथ में नहीं, 8 विकेट हाथ में है. राजा में क्षमता है, पिछले सीजन में देखा है कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. ये डग आउट मुंबई हीरोज का. मनोज तिवारी ने आज ज्यादा कुछ बल्ले के साथ कमाल किया नहीं. समीर की आप बात कर रहे थे, कोई अच्छी बाउंड्रीज के बाद वो भी आउट हो गए. अभी जो वर्तमान औसत है लगभग 7 की. कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्का सा टॉस अप करते हुए सुरेश, थोड़ा हल्का सा फ्लाइट कर रहे हैं. 5 से भी कम ओवर बचे हैं अजय, और अगर इसी रन रेट के लिहाज से ये अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाते रहे तो कुछ खास बचेगा नहीं डिफेंड करने को. और ये मुंबई इंडियंस का डगआउट, खूबसूरती और एंटरटेनमेंट का मेला. मुंबई का डगआउट और खूबसूरती का मेला. और ये नवराज, पंजाब के शेर, पंजाब के पुत्र, थोड़ा एग्रेशन अगर दिखाएं तो मजा आ जाए. एक मुकाबला में याद है जो चंडीगढ़ में हुआ था, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले सीजन इन्होंने, बड़े बड़े शॉट लगाए थे, क्षमता है. पर यहाँ पे जो प्रेशर है वो अलग प्रकार का. ये देखिए, और बेहतरीन संपर्क, इसी की चर्चा मैं कर रहा था. ये क्षमता है, जो लॉन्ग हैंडल है इसका अच्छा प्रयोग करते हैं. मैक्सिमम 6 रन मिलते हुए वहां पे नवराज को. पहले ही मन बना लिया था. और बेहतरीन बैट फ्लो देखिए, कमाल का. पिछला संस्करण इन्होंने पंजाब के लिए खेला था, पर एग्रेशन उतना ही दिखा रहे हैं अजय जितना पिछले साल दिखाया था. और अगर आपको याद हो कि पिछले साल भी इन्होंने कुछ मैच बचाऊ पारियां खेली थी, जिसकी वजह से इनकी टीम ने इनको काफी सराहा था. नर्वस लग रहे हैं सोहेल खान, साथ में मनोज तिवारी, जो निराश होंगे अपने आप से कि एक अच्छी परिपक्व पारी को आज वो अंजाम नहीं दे सके. खैर, नर्व्स का गेम है ये, जो उन पर काबू पा सकता है वो विजेता कहलाता है, वो सिकंदर है. पर ये अच्छा ओवर आता हुआ, फिर से फुल लेंथ डिलीवरी है, बढ़िया बैट फ्लो. गैप में अब ऐसे स्ट्रोक्स तो खेलने होंगे. 16 रन आते हुए अभी तक इस ओवर में. ये महंगा ओवर साबित होता हुआ सुरेश का, पहला ही ओवर है उनका. थोड़ी गेंद को पहुंचते हुए अब थोड़ा ओस का प्रभाव नजर आता हुआ. और ये जिक्र भी किया था वरुण ने कि अब ओस तो रहेगी इस समय, क्योंकि अब अंतिम मुकाबला है, आज का चौथा मुकाबला. आखिरी गेंद इस ओवर की, और सुरेश देखते हैं कहां जाती है शॉट के लिए. एक बार फिर से मिस फील्ड और एक रन आया.
6 ओवर समाप्ति के बाद 48 पर 2। Arun Beni now coming in. Decent bat as well, decent all-rounder for the Kerala strikers. Had a productive over, the last one. Mumbai Heroes. 18 runs coming off of it, Ajay. And that's the kind of over that they need in the remainder of the overs if they want to reach a formidable total. And the dugout for the Kerala strikers, poised as well as excited by the proceedings that are going in the middle of this crease. Raja and Navraj at the crease, trying to push this juggernaut to a sane conclusion. And anything that hits the 3-digit mark should be a sane conclusion. Well, the partnership so far has rendered 30 runs of 17 balls. And these two gentlemen, if they hold fort, can accomplish what they have set out to. And that is to produce a defensive and a formidable total. Well, an attempt to flush the ball towards the offside. You know, at times you realize, Vinny, that in a T10 format, you have to just go for the boundaries. But I just feel also rotation of strike is important. If the boundaries are not coming, they will come in the course of time. But then you've got to take those singles and churn the strike. That's going to be important. Not timing it too well. Well, falling in no man's land. We'll pick up one more run there. The 50 up for the Heroes with that single. Well, that was an irresponsible and not a very well executed shot. The ball lands safely and Raja gets to be on his crease. The 50 comes up for the Mumbai Heroes and it should only be uphill from here. Well, that's a good shot. Let's see whether it crosses the boundary, and it does. A welcome boundary for Navraj, taking up the total to 54. Effortless shot to point. Yeah, the bowler wasn't happy because went through the legs there. Shouldn't have been any run, in fact. But racing should have been fielded at the point area. Normally at that area, at point, you have the best fielders in the team, but not a great effort there. Conceding a boundary. Navraj is a good striker, moves on to 21 now. Glued to the middle. Well, the Kerala strikers dug out, looking excited, looking happy. Well, that's well hit, but if it's not going to make the boundary, and they can only take a single. You know, just seeing the batting lineup for the Heroes, they still have someone like Kapur Vlakia who can tong the ball. Jay also is a good striker. So this still have some batting left in the ranks. The split on the offside, in the gap as well. That's going to be a 4. Good strike there. Put him in style by Raja. A welcome shot, well executed. Punch towards the offside. The Mumbai dugout reeling under happiness after such boundaries are struck every now and then. Navraj doing his part of the deal has cracked a 6er and has scored 3 4s. And Raja on the other end, equally compatible and equally destructive. Well, that's a wide ball. A welcome run yet again brings up the total to 60. The penultimate ball will have to be repeated, and Sohail Khan looking pensive and tensed. Well, can only get a single try for the second, but at the end of 7 overs, it's 61 for 2 for the Mumbai Heroes.